Assalamu alaikum. Today is our lecture starting from to hear about. To hear, to hear gives different meaning. We see here to hear, find out what has happened to someone. For example, have you heard about John? No, tell me. Unfortunately, he has lost his job. To hear, find out what has happened to someone. यानी कि टू हेयर अबाउट हमने सुना अबाउट किसी के मुतल्लक सुना क्या हमने किसी के मुतल्लक सुना कि व्हाट हैज हैपन टू समवन कि उसको क्या हुआ या किसी को क्या हुआ। तो टू हियर अबाउट की प्रपोजिशन आएगी अबाउट यानी किसी चीज के मुतल्लक किसी शख्स के जगह के या एवरीथिंग। तो टू find out be something about something. I found this school in the yellow pages. How did you hear about it? फिर वही बात hear about it यानी कि आपने इस स्कूल के मुतल्लक किससे सुना। तो फिर आंसर में क्या आता है आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट द रीसेंट एडिशन टू योर फैमिली। ये एक सेपरेट एग्जांपल है। वो ऊपर वाली क्या थी आई फाउंड दिस स्कूल इन द येलो पेज हाउ डिड यू हियर अबाउट इट। यानी कि वो बता रहा है आई फाउंड दिस स्कूल मैंने इस स्कूल को देखा येलो पेजेस में। तो फिर क्वेश्चन है हाउ डिड यू हियर अबाउट इट यानी आपने इस स्कूल के मतलब कैसे आप कहाँ से सुनो कैसे सुना। तो अबाउट की प्रपोजिशन आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट द रीसेंट एडिशन टू योर फैमिली। To hear of या to hear about can be used in the same way as to hear about for this meaning only। यानी टू हियर ऑफ और टू हियर अबाउट जो है वो एक ही मीनिंग में यूज होते हैं अबाउट और ऑफ की प्रपोजिशन। नेक्स्ट टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट समवन समथिंग फ्रॉम somebody else फॉर एग्जांपल रेपुटेशन कैरेक्टर एक्सेट्रा। यानी इंफॉर्मेशन रिसीव करना किसी के मतलब किसी से या किसी की फॉर एग्जांपल रेपुटेशन किसी की ये इंफॉर्मेशन या किसी का करेक्टर। तो ये इसके सम एग्जांपल्स हैं एट लॉन्ग लास्ट वी हैव मेट आई हैव हर्ड क्वाइट अ बिट अबाउट यू आई एम सरप्राइज्ड यू हैव नॉट हर्ड मी मोर अबाउट योर आवर कंपनी वी हैव गॉट क्वाइट अ रेपुटेशन। There is a slight difference between the above sentence, and I am surprised to have not heard that company, which means that the person being spoken to does not know that the company exists। यानी क्या शो करवा रहा है एट लॉन्ग लास्ट वी हैव मीट जब से हम मिले आई हर्ड क्वाइट अ बिट अबाउट यू मैंने आपके मतलब कुछ सुना। आई एम सरप्राइज टू हैव नॉट हर्ड मोर अबाउट आवर कंपनी लेकिन मुझे हैरत हुई कि आपने हमारी कंपनी के मुतालिक नहीं सुना। तो ये विच मीन्स इसका क्या मतलब है दैट द पर्सन बीइंग स्पोकन जो पर्सन स्पीक यानी बोल रहा है ये कह रहा है उसको नहीं मालूम कि कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं वो नहीं जानता। द सेंटेंस अबाउट on the other hand suggests that the person aware of the company's existence but knows nothing more about वो शख्स जो है कंपनी के मौजूदगी के बारे में तो जानता है लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानता कि एक कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती है लेकिन उसके मुतालिक कुछ नहीं जानता। ये था टू हियर अबाउट में। और आगे टू हियर फ्रॉम की प्रपोजिशन है अबाउट था किसी के मुतालिक और फ्रॉम यानी किसी की। टू रिसीव न्यूज कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन किसी से किसी की किसी से कोई चीज लेना किसी की या इस तरह का के की तो हम क्या फ्रॉम की प्रपोजिशन लगाएंगे। We see some examples of to hear from। फर्स्ट है I have not heard from him in ages। heard from मैंने उसको बहुत देर से या सालों से ये नहीं देखा। ठीक है का से तो आई अबाउट नहीं आएगा
From. I have not heard from him in ages. When was the last time you heard from your daughter? कि आपने अपनी बेटी को आखिरी दफा कब सुना था? Oh, quite a while ago. Oh, थोड़ी देर पहले या थोड़ा अर्सा पहले, इस तरह. तो to hear from, किसी से, to receive news, किसी से न्यूज रिसीव करना, किसी से कम्युनिकेशन करना, ये यहाँ पे from यूज होगा. Fuzzy, difficult to please, not easily satisfied. Fuzzy mean not easily satisfied. Tell me what you want to eat before I make dinner because I know you are a fuzzy eater. How fuzzy you are. She is not very fuzzy about whom she goes out with, providing he's well off. Fuzzy, difficult to please, or not easily satisfied. That are some meaning of fuzzy. You may say that these are synonyms of fuzzy. Word choosy, particular, and picky, which have the same meaning as fuzzy. ये जो choosy, particular, and picky भी fizzy के synonym है. To make a fuss, to complain, to be difficult, I person not a thing. To make a fuss, शिकायत करना, to be difficult, मुश्किल बनाना, a person not a thing. I, for example, a person एक शख्स, not a thing, लेकिन कोई चीज नहीं. एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इसका क्लियर मीनिंग समझ में आ जाए. इफ आई एम इन द रेस्टोरेंट, अगर मैं रेस्टोरेंट में हूँ, एंड दी सर्विस इज स्लो, तो सर्विस क्या है? स्लो है. आई कांट हेल्प मेक अ फर्स, तो मैं नहीं कर सकती हेल्प मदद मेकिंग अ फर्स, मुश्किल बना के, यानी किसी चीज या शख्स को, या टू बी डिफिकल्ट, या मुश्किल पैदा करके, या किसी को टू कंप्लेन, शिकायत का मौका देकर मैं हेल्प नहीं कर सकती. I do wish you would stop making a fuss and continue with your work. Do not confuse this expression with to make a fuss or to fuss over, which means to show affection towards a person or animal. To make a fuss mean to complain difficult or person or not a thing. लेकिन to fuss over क्या है? Fuss के साथ यहाँ off की preposition और fuss over ये different इसका meaning है कि affection towards a person or animal, किसी animal या person की तरफ affection, to fuss over. To give someone a lot of care and attention, तो ये किसके meaning में आएगा? To fuss over के. For example, my dog loves to be made a fuss of. ये fussed over, to make a fuss है ये, और ये to be made a fuss of, fussed over, ये दोनों जो हैं ये एक ही मीनिंग देते हैं. We have stayed in quite a few hotels recently where the staff made too much fuss of us. Too much fuss of us, yeah, first over, that's our same meaning. Stale, unfresh. For example, bread, biscuits are left. In a restaurant, waiter, sorry to make a fuss, but this bread is stale. Stale, this bread is जो है unfresh है. Stale mean unfresh. I think I'd better open the window in the conference room. It's a bit stale in there. यानी कॉन्फ्रेंस का रूम जो है वो स्टेल है, यानी अनफ्रेश नहीं है. Can you remind me of how the company's account system works? I'm sorry, my mind is a little stale on this matter. मुझे अफसोस है कि मुझे उसके बारे में मालूमात नहीं, या मेरे ज़हन में उस तरह की मालूमात नहीं, या फिर मैं थोड़ी मालूमात रखता हूँ, या मेरा ज़हन जो है वो माइंड अनफ्रेश है उसके बारे में. Not the was stalemate, which describes the situation where neither side in a dispute or negotiation can progress or win. For example, it's clear that we have reached the statement, we'd be better off starting again. The word stuffy is probably more common as far as air is concerned. For example, I have forgotten how it works.